Assalamu alaikum everyone. In this video I will be performing my lab 12 of microcontrollers and embedded systems. So in this lab we have to create a full adder, full subtractor, a demux and a mux. So first of all, here is the code for full adder in the Cortex 3. So first of all, let me zoom. So here first you can see the file name full adder. Then here we have all the variables a, b, c in, sum and c out. So we have the input scene, which is a carry in, which is a 1 bit, and then we have the two 4-bit inputs a and b, which we will be adding. Then we have the sum output, which is also 4-bit, and a carry out output, which is also whichever 1 bit. So here we have created a temporary variable of 5 bit. So when we will add a and b and carry in, so we will be having a more than 4-bit answer. Because if a and b are 1 1 1 1, which is 15, so and if we add carry in with them, so it will become a 5-bit answer of a value greater than 31. So that's why we need a 5-bit variable to store that. So that's why we have created this temp variable which is 5-bit, and then we will basically break this variable into two parts. One will be the sum, we will be showing the sum output, and one will be showing the carry out output. So the least 4 significant bits will be the sum output, and the last bit will be our carry out variable bit. So let's run this. So our compilation was successful. Next we'll go to the file and then new. We'll view this university program WF. Right click here, go to insert node, and we'll go to the node finder, list all the nodes, transfer them here, and then okay. Then we'll be setting their periods, time periods. So first let's set this to 400. So now let's run this. So it run successfully, but we are not able to view the outputs here. I think so there's been some error in the software, some glitch by which we cannot view the output. So but this is how all this full adder is working. At here after giving the inputs, we would have the sum and carry out outputs shown here. So we have performed this in hardware, and we have verified that this code is perfectly working. Now we'll open the full subtractor. This is a file for the full subtractor. Here's the full subtractor. Again we have two 4-bit inputs a and b, and then a output for subtractor, and again a temporary 4-bit variable, and we are simply just storing the result of a minus b in the temporary, and then showing the 5-bit temporary, sorry, we have 5-bit temporary variable. Again we just after the subtraction, whatever the result we have, the first four bits of that will be stored into the sub variable, and the last bit will be stored into the borrow variable. Next we have mux. So now here is the code for 4x1 mux. So first of
all, again module and the name of the module, and then all the variables out, in1, in2, in3 and in4, then control1 and control2, and we have declared our output out, and the inputs are in1, in2, in3, in4 and control1 and control2. So as we know that in the mux we give one input, 4 inputs, and we have 2 selections, depending on which on that our output is shown. So whatever the selection will be at the corresponding input, whatever the input we have will be shown in the output. So here we can see the assign statement, and then we have written out equals to, and these are the variables that will be depending. If out will be equals to in1 when control1 and control2 are not, which means 0. Then the second condition here is in out will be equal to in2 when control1 will be not and control2 will be 1, and similarly in 3 when control1 will be 1 and control2 will be 0, and then in 4 when both control1 and control2 will be 1. So this is how this mux is working. Next we have the demux. So in the demux we have a single input, and we have again selections, 2 selection controls, and we have 4 outputs, and depending on the selection our output will be displayed. So again we have 4 outputs here, out1, output, out3 and out4, and then 3 inputs, which is basically 1 input, and then control1 and control2. So here we can see output 1 will be equal to the input, whatever input is given will be equal to the input when control1 and control2 will be 0, which is not, and then output 2 will be equals to input when control1 will be 0 and control2 will be 1. Then whatever the input is will be at output 3 when control and equals to 1 and control2 equals to 0, and similarly in whatever the input will be equals to will be at the output 4 when control1 and control2 are 1. So that is all from these labs codes, and further we will see the hardware implementation of this on the FPGA board. ये हमारे पास कोड था एडर का, 4 बिट का एडर इसमें अपलोड करा हुआ है, 4 बिट का। अब इसके बाद 4 बिट के 2 इनपुट्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट और जो बटन हैं, फर्स्ट इनपुट है और सेकंड जो अगले 4 हैं ये हमारे पास नेक्स्ट इनपुट है। ये देखें जैसे ये 1 दिया है मेरे पास, आउटपुट पे 1 आ रहा है, ये आप 3 दिया 3 आ रहा है, ये आप 7 हो गया 7 आउटपुट पे आ रहा है, और ये हमारे पास 15 है तो 15 आउटपुट पे आ रहा है। तो ये हमारे पास 4 LEDs हैं जो आउटपुट के लिए है। अब ये मैंने 1 + 1 हमारे पास 2 होता है तो हमारे पास 2 और है। यहाँ पे मैंने एक और किया तो 1 + 2 ये 3 + 1 हमारे पास ऊपर हमारे पास आंसर से 4 सही आ रहा है। तो ये हमारे पास एडर है, और अगर मैं इसके अंदर 7 + 7 कर रहा हूँ तो मेरे पास कहता मैं आउटपुट पर आ रहा है 14। हमारे पास 1 मक्स है, ये हमने इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। ये फर्स्ट स्विच हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और हमारे पास ये 2 कंट्रोल्स हैं। सो ये मैंने 0 0 पर इनपुट 1 हमारे पास हाई किया है तो हमारे पास 1 आउटपुट पे आ गया। अब मैंने 2 आउट किया और मैं इसके ऊपर अब 1 0 दे रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ इनपुट 2 हाई है, बाकी सारी लो हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ हमारे पास वो हाई पे आ रही है। अब मैं इसको 1 0 2 दे रहा हूँ तो हमारे पास इनपुट 3 आउटपुट पे आना चाहिए था, वो मैंने हाई किया आउटपुट पे आ गया। उसी तरह अब मैं 1 1 दूंगा तो हमारे पास ये ऑफ हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं है हमारे पास इनपुट 4 पे, वो आउटपुट पे आना चाहिए था। अब मैंने इसको हाई किया है तो ये हमारे पास इनपुट 4 बाहर आउटपुट पे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं अभी 0 0 कर देता हूँ तो हमारे पास वो लो है तो लो हो जाएगा, या अगर मैं 1 0 कर देता हूँ तो वो हाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो भी इनपुट पे अवेलेबल है वो कंट्रोल के हिसाब से आउटपुट पे हमारे पास मिल जाएगा। बक्स का कोड है 1x4 का, जो हमारे पास फर्स्ट है ये इनपुट है और बाकी आगे 2 कंट्रोल है। ये मैंने इनपुट हाई किया, अब 0 0 पे हमारे पास आउटपुट 1 हाई हो गया। अब मैं इसको 0 1 करूँगा, 0 1 करूँगा तो हमारे पास अब सेकंड आउटपुट का था मैं हाई हो गया। अब मैं इसको 1 0 सेकंड करूँगा तो हमारे पास ये थर्ड आउट हो गया, और जब मैं दोनों को 1 1 करूँगा तो हमारे पास फोर्थ हो गया। अब मैं जब दोनों को कहता मैं कंट्रोल को लो करूँगा तो हमारे पास आउटपुट 1 पे आ रहा है। इस तरह 1 0 0 1 के ऊपर हमारे पास सेकंड पे, 1 0 पे थर्ड पे, और 1 1 पे लास्ट पे, और अगर मैं इसको लो करूँगा तो लो हो जाएगा वो।